Good morning and welcome to you to the Botany online class. Today we will read structure of Eubacteria. We have read shape and size of the Eubacteria. Today we will read structure of Eubacteria. Eubacterial cell have different parts: cell wall, glycocalyx, cell membrane, cytoplasm, cytoplasmic organelles, nucleoid and other structures. So first of all we will read cell wall. Cell wall. Each bacterial cell is surrounded by a non-living cell wall made up of peptidoglycan or murine. Each bacterial cell is surrounded by a non-living cell wall made up of peptidoglycan or murine. आमे तुमको ऑलरेडी पढ़ाई जे the cell wall of Monera are made up of peptidoglycan, किंतु माइकोप्लाज्मा रे सेल वॉल नाही हला आउ केते बैक्टीरिया रो पेप्टिडोग्लाइकान नाही, किंतु यूबैक्टीरिया रो पेप्टिडोग्लाइकान रहिछि. सियानोबैक्टीरिया रे भी पेप्टिडोग्लाइकान रहिछि, किंतु से डिफरेंट. सियानोबैक्टीरिया डिफरेंस कोन? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करिवो, से एमाने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करि परिबे नाही. हला ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया. सियानोबैक्टीरिया से माने फोटोसिंथेसिस करि पारंती. सो each bacterial cell is surrounded by a non-living cell wall made up of peptidoglycan or murine. Peptidoglycan is a polymer made up of N-acetyl glucosamine, NAG, and N-acetyl muramic acid. N-acetyl muramic acid. N-acetyl glucosamine रो शॉर्ट फॉर्म हैला NAG, NAG. N-acetyl muramic acid रो शॉर्ट फॉर्म हैला NAM. Arranged alternately in the polymer chain.
ये जो पेप्टिडोग्लाइकान जो चेन गुड़ा अच्छी से चेन रे एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड दे आर अरेंज्ड अल्टरनेटली। मन कर यहाँ गोटे चेन यहाँ है कौन नैग नैम पुणी है नेग नैम है दे आर अल्टरनेटली अरेंज्ड है तुम दिस इज ए पेप्टिडोग्लाइकान चेन ने एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन गोटे अमीनो एसिड है एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड गोटे है तुम पेप्टाइड एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। The chains are आउट कही each bacterial cell wall or each bacterial cell is surrounded by a non-living cell wall made up of peptidoglycan or murin. Peptidoglycan is a polymer of N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid arranged alternately in the polymer chain. है अल्टरनेटली अरेंजमेंट हो नैग नैम अल्टरनेट अरेंजमेंट होमती रही है तापर यहाँ एमती कंटिन्यूस कर The peptidoglycan chains are cross-linked by four amino acids tetrapeptide four amino acids such as D-alanine, D-glutamic acid, D-glutamic acid, L-alanine, and L and lysine बेकार लिख दबो ग्राम पॉजिटिव और डाईअमीनो पिमेलिक एसिड डाईअमीनो पिमेलिक एसिड G माइनस है देख ये तो पॉलीमर चेन रहा है एटा हूँ नैम नैग एमती है दे आर क्रॉस लिंक्ड ये जो बाय फोर अमीनो एसिड्स 1 2 3 4 क्रॉस लिंक हो एमती सब छंदिकी रही से माने न सब अलग अलग ही जीवेनि कि से माने
है यहाँ गोटे पेप्टिडोग्लाइकान चेन ये गोटे पेप्टिडोग्लाइकान चेन द पेप्टिडोग्लाइकान चेन्स आर क्रॉस लिंक्ड बाय NAM NAG एटा होची NAG NAM NAG NAM ये क्रॉस लिंक होची का भीतर होची NAG आ NAM मध्य क्रॉस लिंक होची NAM आ NAG मध्य क्रॉस लिंक होची NAG आ NAM मध्य क्रॉस लिंक होची हला तेणु ये गोटे चेन टाक गोटे जाली रकम छंदिकी रही चेनटा बुझी पारला दी पेप्टिडोग्लाइकान चेन ता माने ये गोटे चेन आर क्रॉस लिंक्ड एटा क्रॉस लिंक बाय 4 अमीनो एसिड्स 1 2 3 4 अमीनो एसिड्स बात से टेट्रा माने 4 सच एज डी अलानाइन सपोज एटा डी अलानाइन तापर हला डी ग्लूटामिक एसिड एल अलानाइन आउ लाइसिन और डी अमीनो पिमेलिक एसिड जदि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होइतिबो मु परे कहमी ग्राम पॉजिटिव कौन जदि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होइतिबो तार लाइसिन थिबो जदि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होइतिबो डाई अमीनो पिमेलिक एसिड रहितिबो ता भितरे हला दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए पेप्टिडोग्लाइकान चेन डायग्रामटा रहिला तमे डायग्राम जदि करने चाहूब बटन पॉज बटन करदेव पॉज बटन कर देकी तमे ताकू चित्र भी करि परिबो हैला तमे मु तुमको क्लियर देखेदेली जतिक समय तुम फांका है से भितर पॉज करदेव मोबाइल टाकू पॉज कर चित्र करदेव आउ तुम कारण एत पढ़ू पढ़ू मुझे जापर ना जे तुम लिखिल ना तुम लिखा दरकार ना भी तुम तो एत दिहूँ जहाँ मुझे लिखिदे से भी लिख तुम है besides peptidoglycan the bacterial cell wall also contains little amount of carbohydrate and lipid कार्बोहाइड्रेट है श्वेतसार जातीय खाद्य लिपिड है स्नेहसार है स्नेहसार मॉलिक्यूल गुड़ा तेणु पेप्टिडोग्लाइकान छड़ा तुम बैक्टेरियल सेल वाल मध्य थिबो कार्बोहाइड्रेट आउ लिपिड नेक्स्ट है लिख दिल besides peptidoglycan the bacterial cell wall also contains little amount of carbohydrate and lipid कार्बोहाइड्रेट है श्वेतसार जातीय खाद्य लिपिड है स्नेहसार जातीय A Danish scientist Christian Graham used a stain माने रंग used a stain called
ग्राम स्टेन called gram stain crystal violet plus potassium iodide है ग्राम स्टेन टा इज मेड अप ऑफ क्रिस्टाल वायलेट आउ पोटासियम आयोडाइड एटा को गोटे रंग जो रंग रे बैक्टेरियल सेल वाल टा रंग हो जीवो जो बैक्टेरियल सेल वाल एतरे रंग हबो नाही सेटा ग्राम नेगेटिव जोटा वायलेट कलर हो जीवो हैला ग्राम पॉजिटिव कौन हैला ए डेनिश साइंटिस्ट क्रिस्टियन ग्राम used a stain called gram stain to recognize two types of bacterial सेल वाल से गोटे रंगटा व्यवहार करले से रंग नाटा हूँ तुम ग्राम स्टेन एवं से ग्राम स्टेनटा रंगर कौन रंग केमी भायोलेट बैगणी रंग से ग्राम स्टेनटा एवं तार केमी पोटासियम आयोडाइड सहित क्रिस्टाल भायोलेट सब गोटे गोटे दाना दाना मिले ताको पकईदेले से रंग हो एवं से रंगटा यूज करके दी प्रकार बैक्टेरियल सेल को से रिकॉग्नाइज करते the bacterial cell wall which recognizes the bacterial cell wall which receives the gram stain are called gram positive bacteria. And those bacterial cell wall which does not receive which do not those माने do not which do not and those bacterial cell wall which do not receive gram stain are called gram negative bacteria. बा ताकि G माइनस ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया है G प्लस and those bacterial cell wall which do not receive gram stain are called gram negative bacteria बा G माइनस बुझ पार साधारणतः तमें दीटा मन कर नेल गोटे मटर नेल आउ गोटे बुट नेल कि मटर नेल आउ गोटे नेल सोरिष नेल है मटरटा हूँ तादेह कौन प्रोटीन अच्छी किंतु सोरिष तेल अच्छी सोरिष रंगटा धरब ना तेल अच्छी बोली धरब ना है किंतु मटर रे रंग धर नब सेम से जो बैक्टेरिया सेल वाल देहरे तुम रंग रही रंग धरिकी रही से बैक्टेरियल है ग्राम पॉजिटिव आउ जार सेल वाल रंग धरब ना कहते ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया
है। A Danish scientist Christian Gram used a stain called Gram stain. Gram stain is made up of crystal violet and potassium iodide to recognize two types of bacterial cell wall. The bacterial cell wall which receives the Gram stain are called Gram positive bacteria, G+, and those bacterial cell wall which do not receive Gram stain are called Gram negative bacteria. बुझे? अच्छा मु चित्र गोटे कर दूची ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया चित्रटा मु तुम करूची। এটা হল পেপটিডোগ্লাইকান এটা হল প্লাজমা মেমব্রেন হল এটা হল প্লাজমা মেমব্রেন এইটা হল পেপটিডোগ্লাইকান এটা হল তোমার গ্রাম পজিটিভ। কিন্তু দেখ গ্রাম নেগেটিভ ব্যাক্টেরিয়া कौन हो पेप्टिडोग्लाइकानटा कम रहिला आर है तुमर 100 रु 250 आंगस्ट्रॉम थिक है 100 रु 250 आंगस्ट्रॉम थिक हो किंतु এটা হল পেপটিডোগ্লাইকান এইটা হচ্ছে লিপিড এইটা হচ্ছে প্লাজমা মেমব্রেন হলা এটা হল তোমার গ্রাম নেগেটিভ cell wall of gram positive, cell wall of gram negative। देखो डिफरेंस हो कौन आर पेप्टिडोग्लाइकान केते मोटा अच्छी आर पेप्टिडोग्लाइकान केते पतला अच्छी। पचस्तरी रु 120 आंगस्ट्रॉम है एटा है केते थिक देख एटा पेप्टिडोग्लाइकान अच्छी इट इज मच थिकर देयर इज नो लिपिड लेयर आउटसाइड द पेप्टिडोग्लाइकान एटा है लिपिड लेयर एठी नाही तेणु रंगटा ता भितर पशिज जेहेतु जाल जाल एगुड़ा सब अच्छी मझे सब मेसेस माने सब कणा कणा रही रंगटा ता भितर पशिगला पशिला पर रंगटा ता भितर रही ए केस लिपिड लेयर रही बोली रंगटा ता भितर पशिब ना। सो दिस इज ग्राम नेगेटिव एंड दिस इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बुझेगा। नाउ विल सी द डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
है आउ थे देख चित्र गुड़ा तुम देख सेल मेम्ब्रेनटा कमन सामान दुईटर सामान अच्छी आर है पेप्टिडोग्लाइकानटा मच थिकर पेप्टिडोग्लाइकानटा थिनर लिपिड लेयर ये ना ये लिपिड लेयर ये अच्छी है तीन टा डिफरेन्स ये तुम देखी जान ये difference between differences between gram positive and gram negative bacteria है डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आम देखा एपट लिखा ग्राम पॉजिटिव एपट हूँ ग्राम नेगेटिव है आम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन कौन कैरेक्टर अच्छी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन कैरेक्टर अच्छी एक है दी सेल वॉल is rigid the cell wall is flexible rigid माने टाण थी फ्लेक्सिबल है टाण टे इलास्टिक हो the cell wall is rigid and cell wall is flexible the peptidoglycan layer is much thicker. The peptidoglycan layer is much thicker, 100 to 250 angstrom. The peptidoglycan layer is thinner, 75 to 120 angstrom, 75 to 120 angstrom. Third ray there is no lipid layer. There is no lipid layer outside the peptidoglycan. A lipid layer is present outside the peptidoglycan. है तो चित्र देखी चित्र देखिदेव एथर लिपिड लेयर ना बाहर पटे एथर लिपिड लेयर रही बाहर पटे पेप्टिडोग्लाइकान बाहर पटे लिपिड लेयरटे रही टेकोइक एसिड
टेकोइक एसिड इज प्रेजेंट टेकोइक एसिड इज प्रेजेंट गोटे प्रकार एसिड की सब्सटेंस अच्छी टेकोइक एसिड TiCHCHOIC टेकोइक एसिड इज प्रेजेंट टेकोइक एसिड इज एब्सेंट है तुम डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सेल वाल पढ़ले भी जहाँ लिख ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिफरेंस जो पढ़ले भी से लिख है टेकोइक एसिड इज प्रेजेंट एंड टेकोइक एसिड इज एब्सेंट नेक्स्ट हूँ देख आउ थम कहूँ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दि सेल वाल इज रिजिड मजबूत टाण दि सेल वाल इज फ्लेक्सिबल इलास्टिक टिके संप्रसारित हो पार दि पेप्टिडोग्लाइकान लेयर इज मच थिकर पेप्टिडोग्लाइकान मोटा थी दि पेप्टिडोग्लाइकान लेयर इज थिनर एटा 100 ରୁ 250 75 ରୁ 120 थिनर देयर इज नो लिपिड लेयर आउटसाइड द पेप्टिडोग्लाइकान ए लिपिड लेयर इज प्रेजेंट आउटसाइड पेप्टिडोग्लाइकान टेकोइक एसिड इज प्रेजेंट टेकोइक एसिड इज एब्सेंट है 4टा पॉइंट गला 5 पॉइंट अमीनो एसिड alanine amino acid alanine is present in the tetrapeptide amino acid alanine is present in tetrapeptide amino acid lysine amino acid lysine LYSINE amino acid lysine is present in the tetrapeptide instead of amino acid lysine the tetrapeptide contain diamino pimelic acid diamino pimelic acid है 0.5 गला mesosome is present एपर लिखो mesosome is rare or absent mesosome is rare or absent mesosome टा खूब क्वचित थाए कौन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मेसोजोम कौन ना आमर बैक्टीरिया सेल है सेल भितर सेल मेम्ब्रेन ता तले रही सेल मेम्ब्रेन बेले बेले इनफोल्डिंग हो जाए है यहाँ कहते मेसोजोम बोली कहते मेसोजोम टा इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया
A mesosome ta it is absent in gram negative bacteria or rarely it is present. The ratio of RNA to DNA is 8:1. RNA टा 8 भाग थिले DNA टा गोटे भाग अछि. The ratio of RNA to DNA is 8:1. एपटे ला the ratio of RNA to DNA is 1:1. है ये दुईटा पॉइंट 5 पॉइंट कौन अमीनो एसिड लाइसिन इज प्रेजेंट इन टेट्रापेप्टाइड जोटा पेप्टिडोग्लाइकान चेन को जोटा क्रॉस लिंक करथला जो पेप्टाइड चेन ता भितर लाइसिन थी कोतरे ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लाइसिन थाए किंतु लाइसिन बदलले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन थी डाई अमीनो प्यूमेलिक एसिड प्यूमेलिक एटा डाई अमीनो प्यूमेलिक एसिड एटा हला तमरो लाइसिन थी एतरे मेसोजोम टा प्राय वेरिएबली प्रेजेंट इनवेरिएबली प्रेजेंट मेसोजोम्स आर रेयर और एब्सेंट. Ratio of RNA to DNA is 8:1. The ratio of RNA to DNA is 1:1. Equal amount of RNA और DNA थिबो. लो लिपिड कंटेंट सेल वाल लो लिपिड कंटेंट थी 1 to 4%. एपटे हाई लिपिड कंटेंट 11 ରୁ 20%. सेल वाल देहरे तुमर लिपिड कंटेंटा कम थी कौतरे ना ग्राम पॉजिटिव रे आ लिपिड कंटेंट बेसी थी कौतरे ग्राम नेगेटिव रे. It is sensitive to penicillin. It is sensitive to penicillin. जो पेनिसिलिन जो इंजेक्शन टा बा पेनिसिलिन ऑइंटमेंट आम जो लगाऊँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हेतले से मरीज. सेंसिटिव माने पेनिसिलिन से मरीज. It is resistant to penicillin. पेनिसिलिन गोटे एंटीबायोटिक है. एंटीबायोटिक पेनिसिलिन रे तुमर जदि आम दबा ताले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सब मरीजे किंतु ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मरबे ना because they are resistant. So these are some of the differences between gram positive bacteria and gram negative bacteria. Basing on the staining property, Christian Gram recognized two types of bacterial cell wall or two types of bacteria. One is gram positive bacteria and other is gram negative bacteria. The bacterial cell wall which receive gram stain is called gram positive bacteria and the bacterial cell wall which do not receive the gram stain is called gram negative bacteria. The gram negative
bacteria and gram positive bacteria show certain differences. Differences भितर प्रथम है कौन, the cell wall is thick and rigid in case of gram positive bacteria, the cell wall is thin and flexible in case of gram positive bacteria. Peptidoglycan is more in gram positive bacteria and peptidoglycan is low in gram negative bacteria. Lipid content is less in gram positive bacteria, lipid content is more in gram negative bacteria. A lipid layer is absent outside the peptidoglycan, a lipid layer is present outside the peptidoglycan. Mesosomes are present in gram positive bacteria, mesosomes are absent or rare in gram negative bacteria. The gram positive bacteria are sensitive to penicillin, the gram negative bacteria are resistant to penicillin. So these are some of the differences, and these differences very often come in the examination, gram positive bacteria and gram negative bacteria, or difference between cell wall of gram positive bacteria and gram negative bacteria. है तापरे एटा सेल वाल गला, सेल वाल परे आमे पढ़िबा ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वाल इज कंप्लीटेड है। ठीक है, बी रहला ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स तुमको गोटे मु डायग्राम कर दूसरी, डायग्रामटा এটা হচ্ছে ফ্লাজেলা, এটা হলো গ্লাইকোক্যালিক্স, বা তাকে স্লাইম লেয়ার, স্লাইম লেয়ার বা তাকে ক্যাপসুল। এটা হচ্ছে সেল ওয়াল, সেল মেমব্রেন, সাইটোপ্লাজম, न्यूक्लियॉइड, मेसोजोम, ग्लाइकोजेन,
70S राइबोसोम प्लाज्मिड दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल है आमर आमे कोटा पढ़िले केवल सेल वॉलटा पढ़िले है नाउ विल रीड ग्लाइकोकैलिक्स एटा पढ़ा सेकेंडटा लिखाई ग्लाइकोकैलिक्स सेल केवल बैक्टेरिया सेल वॉलटा आम कंप्लीट कले तापर बर्तमान पढ़ा ग्लाइकोकैलिक्स आउटसाइड द सेल वॉल देयर इज ए लेयर called glycocalyx. It is made up of polysaccharide. When the glycocalyx is thick and compact, it is called capsule. When the glycocalyx is thin and loose, it is called slime layer. The glycocalyx protect the bacterial cell from desiccation. शुष्कतारु ताको बंचेकी रखिबो. It also provide the infective property to the bacterial cell है जो कैप्सूल थी से माने भिरुलेंट है जोटा कैप्सूल न थी से माने ए भिरुलेंट कैप्सूल वाल जो न तेणु से कौन करती आर फंक्शन कौन बैक्टेरियल सेल को से शुष्कतार बचेबे जदि मीडियमटा सुखीज चारिपटे जेहेतु स्लाइम लेयरटा अच्छी शुष्कतार बचाऊँ कैप्सूल लेयरटा दे इम्पाक्ट बा ताकू प्रोवाइड करती दि इनफेक्टिव प्रॉपर्टी इट इज भिरुलेंट और ए भिरुलेंट इनफेक्टिव प्रॉपर्टी से प्रोड्यूस करती है ये चित्रटा तमें कर सारा पर ग्लाइकोकैलिक्स विषय लिखिबो है यहाँ मुझे बर्तमान लिभौची तुम चित्रटा तो रहा चित्रटा को तुम पॉज करके चित्रटा कर सारा पुणी तापर लिखिबो है लिभौची outside the bacterial cell outside the bacterial cell bacterial cell wall outside the bacterial cell wall there is a layer there is a layer called glycocalyx. It is made up of polysaccharide. It is made up of polysaccharide. When the glycocalyx is thick and compact, it is called capsule. And when it is thin and loose, it is called slime layer. बुझिपारा जदि ग्लाइकोकैलिक्सटा जोटा बैक्टेरिया सेल वॉल बाहर अच्छी
एटा है ग्लाइकोकैलिक्स है एटा यदि ठीक आउ कंपाक्ट हो कह कैप्सूल कह जो थिन आउ लूज हो कह स्लाइम लेयर it protects the bacterial cell from desiccation and give and provide infectivity infective property प्रथमतः डेसिकेशन माने शुष्कता सुखिला बैक्टेरियल सेल सुखिले मरी जावा कथा तेणु जेहेतु स्लाइम लेयर बा कैप्सूल लेयर गुड़े ऊपर अच्छी ये बैक्टेरियल सेल को सुखापी दब ना मीडियम सुखिले सुखापी दब नहीं द्वितीय कौन हो इट प्रोवाइड्स इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी टू दी बैक्टीरिया when the capsule is present the bacteria are virulent माने रोग करेब आक्रमण करिपारिबो तो होस्ट को आक्रमण करिपारिबो भिरुलेंटा जदि कैप्सूल थिबो ताले भिरुलेंट व्हेन कैप्सूल इज एब्सेंट and when capsule is absent it is avirulent है रोग करेब नाही है जोटा निमोनिया होमको जो निमोनिया रोग हो डिप्लोकोकास निमोनी जो निमोनिया रोग हो जो निमोनिया बैक्टीरिया थे कैप्सूल थी दे आर भिरुलेंट से माने निमोनिया रोग करे पारिबे से बैक्टीरिया जो मानकर कैप्सूल नाही से माने ए भिरुलेंट से माने निमोनिया करि परिबे नाही तमे आर वर्ष पढ़िला बेले से सब पढ़िबो जे केमिति जेतबे बैक्टीरियाटा को आम केमिति रिकॉग्नाइज करिबा कोटा भिरुलेंट कोटा ए भिरुलेंट केमिति रिकॉग्नाइज करिबा सेटा गोटे एक्सपेरिमेंट सब अछि से एक्सपेरिमेंट आर वर्ष तमे हेटा पढ़िबो खाली एतिक मन रखथिबो जो बैक्टीरिया सेल तुम कैप्सूल थी बा तुम ग्लाइकोकैलिक्स ठीक ग्लाइकोकैलिक्स थी दे आर भिरुलेंट हम रोग करें निमोनिया करें आ जो मान कैप्सूल न थी से माने है ए भिरुलेंट।